Tires and fair play. Good evening and welcome, dear viewers. Day before yesterday when I reported it, first there were denials, then yesterday there were explanations, but today nobody can question us anymore because the truth is this. Influence was used and the underworld and relatives of terrorist Yakub used the name of the D-gang associates to get a lavish mausoleum-type structure built for the terrorist Yakub in the heart of India's financial capital of Mumbai. Viewers, the biggest headline in all of this has been the open use of the underworld name and the open cohabiting between politicians and the underworld. Pandering to terrorists, viewers, appeasing terrorists has become the norm for some politicians. And without that, it is impossible that a terrorist responsible for killing 257 Indians in 1993 would have been given a memorial on the soil of the same city where 257 Indians, because of him, shed their blood and lost their lives. I have brought fresh evidence tonight to base my questions. But my bigger question is this, and my question is to the central government. When will the central government release the Vora Committee report? The Vora Committee report, which has the names of some very important politicians, I'm told, who have had links with the underworld. Why are those politicians with links to the underworld, which are proven, being protected? Which country would do this? Protect politicians who have links with the underworld? Is this refusal to release that report, the Vora Committee report, leading to situations where the underlings of terror-linked politicians feel they've got away with their links to Dawood for so long and will probably get away with continuing to compromise on our nation's security? Viewers, what has happened in Mumbai is frightening. But what we need to do now, you and I, is that we need to really build the pressure to have the Vora Committee report released. The release of the Vora Committee report will stop things like this from happening. It will change the entire political debate in the country and move it in a positive direction. So I need your help and support, viewers. I've fought for this alone for a long time. Believe me, viewers, large sections of the Lutyens media are sold out. They know the names. They don't want the names to come out. Only you and I can build pressure. Republic and you can build pressure. Only then will the politicians who have kept this report in hiding for decades respond to us, ladies and gentlemen. Let's build the pressure, release the Vora Committee report, and as more evidence emerges from Republic's investigation, the terror memorial I'm talking about, which was built in the heart of Mumbai. Unbelievable that ever happened. Ladies and gentlemen, debate number 2 tonight. He has Z plus category security. One of India's most prominent politicians, the Chief Minister of Assam, his security breached openly today. Who is responsible? Why is the person who breached his security being allowed to get away? And debate number 3 tonight, viewers. They said dhokha alarm, they said the Chinese were at Galwan. But where are they when the Modi government strategy has led to disengagement of the LSE? That's debate number 3, and here are the headlines this Friday evening on the Debate Tonight. From Dawood link to Mahavikas Aghadi meeting with 2 leaders, the Yakub Memon terror memorial news break is exploding. आज के आदेश दिए हुए हैं और कार्रवाई हो रही है. आपने देखिए कार्रवाई शुरू है. जो ट्रस्ट के लोग हैं उनसे भी क्या पूछताछ होगी सर? जांच के बाद सब हो जाएगा. जांच होने दो. Threat complaints were ignored. It's clear that the Mahavikas Aghadi government allowed the terror memorial. Massive controversy breaks out as a TRS leader breaches the security of Assam Chief Minister Himanta Biswa Sharma in Hyderabad. Z plus security by the CRPF for Himanta Biswa Sharma breached on the stage. The Assam Home Secretary and DGP seek a report from the Telangana government. India and China disengaged further at the LAC. Troops move back on both sides in the Gogra and the Hot Springs area. And as Modi's foreign policy puts India in the lead, naysayers and the dhokha alarm brigade go missing.
Ladies and gentlemen, ever since horrific visuals of a mausoleum-type structure being built for the 1993 blast terrorist Yakub Memon came to light, Republic has been digging very deep to investigate how such glorification of a terrorist responsible for killing 257 people was made possible in the first place. And the findings raise some big questions for the Mahavikas Aghadi government, the disastrous government which was in power when the alleged beautification took place. Here is a look at the story, the developments, our latest developments on the story, and then we shall debate. This beautified shrine for the 1993 blast terrorist has shocked the nation. Republic TV decided to investigate who was responsible for the tribute to a terrorist, and what surfaced are sensational revelations. As I begin to investigate lead into the glorification of a 1993 bomb blast terrorist Yakub Memon, I came across a complaint that described a threat issued to then trustee of Bada Qabristan to ensure Yakub Memon's grave is beautified. Quoting the threat received from Rauf Memon, the complaint says the block number 17, 18, 19 of graveyard should be issued to Yakub Memon and his family. If not done, there will be Tiger Memon who will intervene, and some of the either way, the threat that was given to the trustee clearly mentioning that he can be disappear. राउफ मेमन ने लेटर दिया था 17, 18, 19 जो एच ब्लॉक 20 जो अभी फिलहाल पूरा एच ब्लॉक जो मार्बल का जो है वो बना हुआ है H20 वो उन्होंने हमसे मांगा था। मैं था और एक दूसरा हमारे साथ ट्रस्टी थे, फॉर्मल ट्रस्टी परवेज सरकार है, तो हमने उसको देने से उनको डिनाई करा कि हम आपको ये चीज़ नहीं दे सकते हैं। तो उन्होंने काफ़ी बार मतलब नहीं दे सकता, हमको परेशान करने लगे। जब बार बार मैंने उनको मना करा तो फिर मुझको ये बोलने लगे लो भाई का फ़ोन है, भाई से बात करो, धमकी देने लगे। We at Republic look into who Tiger Memon's keen Rauf Memon was and found the shocking images of meeting with the top Mahavikas Aghadi ministers. A deep dive into the legal position in the case led Republic TV to this court order. It's dated 8th October 2021. Republic TV has accessed a court order dated 8th October 2021. The order clearly mentioned and the court maintains that the Qabristan land cannot anyone which comes under the work property cannot be allotted to any individual. Something we can say it's a contempt to court, while soon a petition is also going to be filed. As the evidence piles up, the MVA is now washing its hands off. इनकी कवर इनके कार्यकाल में हुई। भाजपा में दिल्ली में वो राज कर रहे थे, महाराष्ट्र में भी उनका ही राज था, तो कबर बनी कैसे और कबर बनाने में जिम्मेदार कौन थे, उनका बॉडी किनके हाथ दी गई और उनकी जो अभी कबर है जिसके बारे में यही कह रहे हैं ये उनके कार्यकाल का ये घटना है और इसके जिम्मेदार वही है। The Maharashtra Chief Minister has stepped in. He's ensured appropriate action. पोलिसांना सूचना दिलेल्या आहेत, महापालिकेला सूचना दिलेल्या आहेत। याकूब मेमन हा देशद्रोही आहे, बॉम्बस्फोटमधला आरोपी आहे, त्याला फाशी दिलेला आरोपी आहे, त्यामुळे त्याचं उदात्तीकरण महाराष्ट्र खपून घेऊ शकत नाही, त्यामुळे कायदेशीर कारवाई जी आहे गृह विभाग करतोय। But many people are now questioning how the party associated with Balasaheb Thackeray, who stood against terror, allowed this. For years and decades, we in the RSS and VHP had respect for Balasaheb Thackeray. Yakub Memon was the principal architect of the bomb blasts in the Mumbai. More shameful, at a time when the Maharashtra was ruled by a Thackeray. It's the biggest political face-off. Let's debate. It's a shame, isn't it? Viewers, Chandrasekhar Jha, KJ Hosemon, Chandrasekhar Jha of the Shiv Sena, KJ Hosemon of the NCP, Mufti Manzoor Ziai, Islamic scholar Syed Asad Abbas and Kishore Tiwari of the Shiv Sena. We have Shweta Shalini of the BJP, MR Venkatesh, Ishkaran Bhandari. And my first question is to Jazeel Naurange, who's a former trustee. And he's written a letter in which he says that a relative of Tiger Memon gave him a threat. Viewers, please listen to this. I'm not making this up.
This is documented. The person who received the threat from a relative of Tiger Memon called Rauf Memon is with me tonight on the program. We need to listen to this to realize the way things have been going on in Mumbai. Jazeel ji, can you hear me? Yes, sir. You can speak in English, Hindi, Urdu, Yes, sir, whatever I you're hear. comfortable with. My question to you is this. What did Rauf Memon tell you? My information is that Rauf Memon, who's a relative of Tiger Memon and a close aide of Tiger Memon, he threatened you. Tell me what happened. He approached me at Mumra Salwa Hotel and he's come to me and say that give me the grave of Yakub Memon, cover 17, 18, 19. He has told me that give me the grave and we'll meet पक्की कवर, जिसको पक्की कवर बताया. He has told me that we'll made permanent and पक्की कवर, and I deny that I will not give you. After that he is trying to me threaten continually. If you will not give in me, that I will ले भाई से बात कर ले, टाइगर भाई से बात कर ले. If you give me, तो टाइगर भाई का हाथ तेरे सर पे रहेगा. If it not given me, तो क्या तेरे साथ हो सकता है, आई विल, यू डोंट नो, और आप इस चीज़ से वाकिफ़ नहीं हो. बोले बॉम्बे वाकिफ़ है, तो इस चीज़ से वाकिफ़ नहीं है. ही हैज़ टोल्ड मी लाइक दैट. एंड आफ्टर दैट आई हैड मेड कंप्लेंट एंड LT मार्ग पुलिस स्टेशन एंड कमिश्नर ऑफिस एंड ATS ऑफिस, एंड 3 of these authorities of the can't reply anything. And after that I had launched NC in मुमरा पुलिस स्टेशन. उसके बाद में मैंने NC जो है मुमरा पुलिस स्टेशन के अंदर जो है वो की. तो ये बनी कैसे? नहीं, ये जो वहां पे जो मार्बल टाइलिंग की गई, ये सब बनी कैसे और कब बनी? ये अभी बनी है. ये इन लोग ने जो है हमको ट्रस्ट से हटाकर, इन लोग ने ट्रस्टी जो है वो उनके साथ में इन्वॉल्व है. फोटो जो है ऑलरेडी जो है आपके स्क्रीन पर है. इन लोग ने मिलकर जो है रऊफ मेमन की मिलकर जो टाइगर मेमन का जो भाई है उसकी ग्रेवयार्ड को इनको पक्का बनाना था, कबर बनाना था. इसके लिए इन लोग ने जो है इसके साथ में मिलकर इन लोग ने अभी बनाई है. अभी मतलब कब जो है हम इसको बनाने के लिए दे अभी मतलब कब? इसके लिए इन लोग ने, हाँ, LT मार्क ने जो है इसके ऊपर अभी ये 6 महीना 5 महीना पहले इन्होंने काम 6 महीना 5 महीना पहले, मतलब जब MBA की सरकार थी तभी. फॉर्मर चेयरमैन अर्नब, इससे जगह क्यों दी? आप तो जुम्मा. एक मिनट, why are you intervening? You know, people are listening to this. 1 minute. सैयद बोलने दीजिए प्लीज. आपको मैंने अभी मौका नहीं दिया है. आप कह रहे 6 महीने पहले. ने 1 साल तकरीबन 2021 के बाद से लोग ने शुरू किए, और मैं इसके अंदर उस वक्त इन्वॉल्व इसलिए नहीं हो पाया कि जब मैंने LT मार्क में कंप्लेंट किया तो उल्टा LT मार्क ने हमारे पर FIR करके हमारे को इतनी तकलीफ दी. सर, क्या हमारा घर जो है पूरा परेशान हो गया था. ये तो 1 मिनट, वो सफर करना पड़ा हमारे घर पूरा. इससे ये बात प्रमाणित हो जाती है. इट्स प्रूवन राइट नाउ. श्वेता, MR, प्लीज कम इनटू द डिबेट. इट इज प्रूवन that the Dawood Ibrahim group, the underworld group, was openly giving threats and openly saying that तुम्हें नहीं पता टाइगर मेमन का क्या हाथ है, कुछ भी हो सकता है. मतलब this Tiger Memon group was very active during the MVA time in Mumbai. There's no doubt about it. They were issuing threats. Yes, MR. They got the lease of life, probably a booster dose. Under the MBA, because it is impossible that they were probably sleeper cells, but they got activated thanks to MBA. This is the most important thing. And you said something very important in your opening statement, the ORA committee report. I think it is time the ORA committee report is actually put in the parliament for discussion or laid out in the Lok Sabha, and we all know the contents of it. Because 30 years, 29 years has elapsed. It was supposed to come out in October 1993, if my memory serves me right. Today we are in close to October 2022. 29 years have elapsed. I agree. Arnab, but Shweta, I agree with you, MR. The point is, I agree with you, MR. But this is a very important program. एक मिनट. Today's program becomes a very important program because I have the eyewitness and the complainant on the program.
He's here before you viewers. His name is Jazil Naurange. खुलकर आज रिपब्लिक टीवी पर बोल रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ. What does this prove? Arnab, What does this prove, Shweta? This also proves that the entire police department was being used by MVA and they were completely hand in glove because he complained and yet no action was taken. This also proves, and in fact, I'm not surprised because Nawab Malik was on the Waqf board. He was the minority minister and he was in jail. Yet he was never removed from the ministership. This also proves that why Aslam Sheikh became the minister. Wasn't Aslam Sheikh the one who actually wrote the mercy petition for Yakub Memon? Yes. Yet he was on the ministership. He got the ministership. So this entire MVA government was being ruled by somewhere else, and we all know it. And now you have the evidence right here in front of you, and that is the reason why they Probably have converted Karachi. Probably Karachi. Yes, absolutely. And that's why you look at it. 257 people died. Yakub Menon was guilty. The entire Mumbai should actually be against him. And you think no Muslims died and 257 people? Of course they died. You go and tell them that this is a shrine. Tell them who died, their families, that this is the shrine of Shri Yakub Menon. And you go and offer your flowers there. Will they do it? No. The thing is, Shweta. This is the question that we need my to next ask. question. My next question is a lot of responses coming in. Viewers, this Republic investigation. Today I have the complainant live, and I compliment his courage for coming and speaking out today. कब तक छुपाई जा सकती है ये चीजें? Yes, Aslam Sheikh is the person who signed the mercy petition for Yakub Memon. Aslam Sheikh was made a minister by Uddhav ji. Uddhav ji made him a minister. Very important minister. Was it a reward for signing the mercy petition for Yakub Memon? And is Rauf Memon close to Nawab Malik? My question to the NCP, former National Secretary and senior leader Mr. Josimon is Rauf Memon close to Nawab Malik? Nawab Malik, who has deals with Dawood's business empire, is he also close to Rauf Memon, who's a close aide and relative of Tiger Memon, the terrorist? Tell me, Mr. Josimon, these are relevant questions. You and Chandrasekhar Jha need to confess on TV tonight. See, you have asked me so many questions. And if Nawab Malik has got any kind of illegal connections with the people who mentioned here, those who have damaged this country, they can be termed as the enemies of the state. That NCP will not support anybody who is supporting terrorism. And now all the Why did you not agencies are remove with Nawab you. Malik from You can have a ministership fair when he went to inquiry. jail? No. Let me complete. I was silent when you are speaking. I was silent when you are speaking. Now it is my turn. I have to speak. I will answer all your questions. But let me speak first. Now I am speaking. Okay. So all the agencies are with you. You can have a fair inquiry, and whoever the culprit, you can punish them. That is number one. Number two. As for now, we are discussing about this upliftment of this one cover. See, according to my best information of Islamic culture and Islamic belief, there shall not be any kind of. Now we'll make it a question of human rights of Yakub Memon. No. Living rights and rights in death. No. What an argument. You will now tell me about his rights as a dead man. No, let me complete. So that is an illegal activity. It shall not be supported. And somebody have made some kind of illegal constructions in a Kabristan. So we shall not politicalize it. No, there's no politics here, but somebody has tweeted. Somebody has tweeted, Mr. Josimon, somebody has tweeted, and this should be sent to all of you people who ran the MVA government. Somebody tweets using the Republic hashtag Yakub Gang. When soldiers lay down their lives eliminating terrorism, Yakub Memon was being glorified by the MVA. Shameful.
This has been tweeted by Swami. That statement shall not be there. By Swami underscore 65. No, this is the point is did you think no. One second. Chandrasekhar Jha, your government. Yeah. So you take responsibility for this terror memorial or not? Terror memorial. Nice word. First thing I should tell you, the tomb has been built by whom? The BJP government in 2015. The so-called shrine which has been built. So if you see, that's an outright lie. First question goes to the BJP itself. That's an outright lie. No, you're lying. You're uttering a falsehood. The person is on the program right now. He said it was built last year, between 1 year and 6 months back, when the MBA was in power. No. When Uddhav Thackeray, Uddhav Ji was the chief minister. The body was exhumed in 2015 by the BJP government. The memorial was built when the MBA was in power. I'm asking you, why were you doing that? Why were you doing that? The complainant is saying here, he's on television, he's live. Itself. The question of exhuming the body of a terrorist in the burial ground, who has done it? I am asking everybody, and I am asking to myself also. Yeah, you need to ask yourself, because you don't know what you're talking about. A terrorist has been exhumed No, in a burial 1 minute, 1 minute. There is a grave. There is a grave. You ask. No, 1 minute. I'll let the BJP spokesperson respond. There is a grave. There shouldn't be a grave. If you ask me, Yakub Memon should have been picked up and dropped in the ocean like many other terrorists have been by the United States of America. That's what he deserves. First of all, he should not have been allowed this kind of a send-off. Second point, I agree with you on that. But who built the memorial? Shweta, he says they didn't build the memorial. He says this was built by the BJP. Arnab, first and foremost, let me correct Mr. Jha. In 2015, you were sitting with us in that government also. Second, in 2015, a grave was built. But 3 conditions were laid down when the body was actually handed over to the family. One, that there'll be peace shall remain. Second, only family members will attend the funeral. And last but not the least, there will be no memorial. Yes, there is a... You cannot do it. And what are the conditions? Absolutely. What kind of conditions you are telling to the public that you are exhuming the body of a terrorist into that grave? Supreme Court, because of Justice Kurian, no. We were minority, but you were taking the decisions. Why did you allow? I completely agree. That's viewers, exactly what I'm asking you. A grave was made. Why did you allow the memorial? I have just been told that a statement has been made on this subject. Shweta, 1 minute, Mr. Jha. This is becoming one of the biggest controversies of the year. I've just been told that the Deputy Chief Minister of Maharashtra on the Republic news break about the Yakub gang and the terror memorial has just made a 40-second comment. Can I just play it? It's a breaking news input coming in on the story. Devendra Fadnavis, please. I'm coming back in 40 seconds. मुंबई में बम विस्फोट करने वालों को कौन-कौन संरक्षण देता है, ये हमने देखा है. उनके साथी अभी भी जेल में बैठे हैं, जिनको मंत्री बनाया गया. सबसे महत्व की बात यह है कि हमारी सरकार में हिम्मत थी. सुप्रीम कोर्ट तक हम गए. रात को 2 बजे सुप्रीम कोर्ट खुला. सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई ली और उसके बाद मुंबई बम विस्फोट के आरोपी को फांसी दी गई. अब ये जो महिमा मंडन है, ये किसके काल में हुआ, ये आपको पता है, और इसलिए वो बोल नहीं सकते. लेकिन आज वो दिन नहीं है, इसलिए आज ये सवाल मत पूछिए. That comment made by Devendra Fadnavis, Mr. Eknath Shinde was also there with him, Kishore Tiwari. But before that, Mufti Manzoor Ziai. The Kabristan land is a Waqf property which cannot be allotted to any individual person. This is the order of the Bombay High Court 2021. So who made the memorial for Yakub Memon? ये जो मार्बल स्ट्रक्चर है which came around the grave, ये मार्बल स्ट्रक्चर कैसे बनी? मुफ्ती जियाई जी, हाई कोर्ट की ऑर्डर है. और खुलकर आज इस प्रोग्राम पर जजील नवरंगे, जजील आपको मेरी आवाज आ रही है, वो खुलकर कह रहे हैं कि धमकी दी जा रही थी. राउफ मेमन कह रहे थे ये बनाओ, ये अलाउ करो, नहीं तो टाइगर मेमन डील करेंगे आपके साथ. ये टाइगर मेमन की सरकार चल रही थी क्या मुंबई में?
ये टाइगर मेमन की सरकार चल रही थी क्या? ट्रस्ट पर इतना कंट्रोल कैसे था मुफ्ती जियाई जी? अर्नब, आज बहुत ही खुल करके मैं कहना चाहूंगा कि यकीनन ये जो एमवीएस सरकार थी ना, ये सारी एमवीएस सरकार टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर के काम करती थी। आपको मैं बताऊं कि इन लोगों ने मिलकर के उन तमाम लोगों का संरक्षण तक हटाने की बात की जो टेररिज्म के खिलाफ बात करते हैं। पूरी दुनिया में आप जानते हैं कि मैं टेररिज्म के खिलाफ लगातार बात करता हूं। मेरी बात सुने। आप क्या बात कर रहे हैं? लगातार क्या बात कर रहे हैं? आप टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं। आप खुद क्या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से हैं? पूरी दुनिया में क्या बात कर रहे हैं? नेशनल चैनल के लश्कर के लोग आप डिबेट में जब बैठे तो आप ठीक तरीके से बात करिए। क्या चीज की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हैं? आप बोलने दीजिए, मुफ्ती जियाई को बोलने दीजिए। चंद्रशेखर जाओ, शिवसेना, आप बोलने दीजिए उनको। कितने लोगों का मुंह चुप कराएंगे आप? बात नहीं करने देना चाहते हैं आप? खामोश रहिए। आप सुनिए इस बात ऑर्गेनाइजेशन की बात क्यों कर रहे हैं? पूरी दुनिया में हम लोगों ने टेररिज्म के खिलाफ बात की है। बीजेपी के जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ निकलते हैं, जम्मू एंड कश्मीर में उनके मेंबर निकलते हैं, तब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहां जाती है? मैं बाकायदा तौर पे जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि इन लोगों ने मिलकर के मुल्क के अंदर में और देश के अंदर में, प्रदेश के अंदर में जो हालात बनाए हैं उनको गौर करना होगा कि मुल्क कहां जा रहा है और देश आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोगों के आप जानते हैं कि क्या हालात बना रखा है? आप क्या बात कर रहे हैं? आपने हम लोगों का जीना मुश्किल कर रखा है। आपने उन लोगों का जीना मुश्किल कर रखा है जिन लोगों ने टेररिज्म के खिलाफ गुफ्तगू की है। हम लोगों ने पूरी दुनिया में टेररिज्म के खिलाफ बात की है और आप हम लोगों की सिक्योरिटी इसलिए हटा देते हैं कि आप टेररिज्म के खिलाफ बोलते हैं। आप जानते हैं आप लोगों ने क्या कर रखा है? आप हमारे कंधे का इस्तेमाल करते हैं, मुसलमानों के नाम का इस्तेमाल करते हैं और सिर्फ वोट पाने के लिए सब कुछ राजनीति आप करते हैं। आपको गौर करना पड़ेगा और एनडीए सरकार को सोचना चाहिए बोलने दीजिए इस्तेमाल कहां किया है। बहुत जिम्मेदारी के साथ कहूंगा आज आपसे कि आज मुल्क के हालात को जिस तरीके से बदलने की कोशिश की जा रही है, आप जानते हैं आप किसके सपोर्ट में बात कर रहे हैं? मुल्क के खिलाफ काम करने वाले लोग, मुल्क के एकता और अखंडता को तोड़ने वाले लोगों के खिलाफ समर्थन में आप बात कर रहे हैं। ये किसी के सपोर्ट में कोई बात नहीं कर रहा है, कोई टेररिस्ट एक्टिविटी के बारे में बात नहीं हो रही है। आपको एकदम सिंपल बात बता दूं, आपको एकदम सिंपल बात बता दूं, यहाँ पे एक टेररिस्ट को गाड़ा क्यों गया बॉम्बे में, मुंबई में क्यों गाड़ा गया? सपोर्ट किया है बताइए। ये इस्लाम और मुसलमान के खिलाफ है और आप इस्लाम और टेररिस्ट को वहां गाड़ा किसने गाड़ा? वो परमिशन किसने दी? और एमवीए की सरकार किसी कोर्ट ने परमिशन नहीं दिया। कर रही है। आज पूरे मुल्क में हमें बदनाम किया जाता है आपके नाम की वजह से। कोई सरकार आप लोग इस्तेमाल होते हैं, आप लोग इस्तेमाल होते हैं, इसलिए इस्तेमाल होते हैं करते रहेंगे। और ये चीज की बात मत करें। viewers on the program, मुफ्ती जियाई जी, देखिए मैं चंद्रशेखर झा एक बात आपको कहना चाहता हूं। I want to say something to you. I want to say something to you and you know this. You know this. श्वेता शालिनी knows this. MR वेंकटेश knows this कि मुफ्ती जियाई के साथ मेरी बहुत चीजों में सहमति नहीं होती है। I disagree with him on many things and on many occasions. But what he has said today is true. कि आप राष्ट्रवादी लोगों के खिलाफ कैंपेन कर रहे थे। राजनीतिक षड्यंत्र या विवशता हो मुझे पता नहीं है। I do not know whether this is your conspiracy or your compulsion, Mr. Jha. But did you think that nobody is going to expose what you were doing? No conspiracy. 1 minute. I want to come back, Ishkaran. Ishkaran, please watch. You're the lawyer here. I want to bring back the key witness in this, the complainant Jazeel Naurange. And my next question, Jazeel ji, to you is this. Jazeel ji, जरा गौर से मेरे इस सवाल का जवाब दें। Yes. जो मुझे खबर है Yes, sir. कि टाइगर मेमन के रिलेटिव रौफ मेमन ने आपको थ्रेटन किया कि आपको याकूब मेमन, वहां पे याकूब मेमन जो टेररिस्ट हैं उनके लिए वहां पे एक मेमोरियल टाइप की बनेगी, आप इसका परमिशन दीजिए। आपने कहा कि फोन कॉल आया था, उसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन करता हूं। दैट इन द फोन कॉल यू सेड याकूब भाई इज ब्लेस्ड विद मार्टिरडम। टाइगर मेमन ने रौफ मेमन ने आपको कहा बट टाइगर भाई इज स्टिल अलाइव। You should work to provide a permanent grave for Yakub Memon, otherwise Tiger Bhai will speak to you. If you don't, we will make you disappear. आपको खत्म या खलास कर देंगे, ऐसी कोई बात हुई? रौफ मेमन ने आपको क्या कहा? खुलकर बोलिए, कोई डरने की, पूरे देश के लोग आपके साथ हैं, आप खुलकर बोलिए। इश्करन भंडारी उसके बाद बताएंगे फोन कॉल में किस तरह की थ्रेट दी गई, ये कब हुआ, आपने कंप्लेंट किसको की, उस समय कमिश्नर कौन थे, सब कुछ बताइए हमें।
ये रऊफ मेमन जो है मुमरा में आया था सलवा होटल के पास में। उस वक्त वो मुझसे मुलाकात किए और मुझको, मैं उनको जानता नहीं था, ऐसी नॉर्मल मिले और मेरे को बोले क्या तू जो है ये कवर मुझको अलाउड करा के दे 17, 18, 19। तो मैंने उनको मना किया। मना करने के बाद में जब मैंने उनको बोला आपने क्यों मना किया, आपने क्या कहा कि टाइगर मेमन है बॉम्बे के लिए, मैंने कहा कि मैं नहीं कर सकता हूँ, मतलब एक आरोपी है उसके हिसाब से मैं उनसे कुछ भी, मेरा रिलेशन नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। ट्रस्ट ने सब देना लेना बंद किया है। तो बोले उन्होंने बताया कि बॉम्बे के लिए उसने इतना काम किया है, ऐसा किया वो क्या, मतलब ये सब चीज़ों में 95 में मेरी उम्र छोटी थी, मुझको इस बारे में कुछ मालूम नहीं है। जिसने बेगुनाह लोग को मारा है वो गलत तो गलत होता है, मैं उसका साथ नहीं दे सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि अगर तू साथ नहीं देगा तो तू तकलीफ में आएगा, ले भाई से बात कर। तो मैं बोला भाई मतलब भाई तो एक ही है। बोले कौन क्या? बोले ले टाइगर भाई से बात कर। टाइगर भाई। तो मैं थोड़ा सा टिटेन हुआ। मैं बोला मैं नहीं बात कर सकता हूँ, आप जो है वो चीज़ को देख लो। तो बोले अगर तू बात नहीं करेगा तो तकलीफ में रहेगा, काम नहीं करके देगा तो तू नुकसान में रहेगा, अगर तू करके देगा तो भाई का तेरे पे हाथ आएगा तो हमेशा तू खुश रहेगा, और नहीं करके देगा तो तू तकलीफ में आएगा। मेरे को तो डर इस बात का भी है कि आज मैं अलाइव बैठा हूँ, मैं इस बात से खुश था, मुझे रिपब्लिक में आने का चांस मिल रहा है और मेरे को अपनी बात बोलने का मौका मिल रहा है। लेकिन मेरे को इस बात का आज भी डर है कि ये इंटरव्यू आज ख़त्म हो जाएगा, कुछ दिनों के बाद में मेरे साथ में हादसा झूठा FIR हो जाएगा, उसका क्या करेंगे? मैंने उसको नहीं करा, मैंने कंप्लेन करा। कंप्लेन करने के बाद में मैंने कमिश्नर ऑफिस में, LT मार्क में, कमिश्नर कौन थे? कंप्लेन की। कंप्लेन करने के बाद कमिश्नर कौन थे उस वक्त? कमिश्नर परमवीर सिंह थे कमिश्नर उस वक्त। परमवीर सिंह कमिश्नर थे। किशोर तिवारी आइए। No, more and more. You are seeing this. You are seeing the connection. Yeah. Your friend, our friend rather. Parambir Singh was the commissioner, and he complained to Parambir Singh. क्या आपने परमबीर सिंह को चिट्ठी लिखी? उसमें आपने This is my complaint copy. Unbelievable, Arnab. Unbelievable. People of this country should watch. Unbelievable. और श्वेता सिंह, no, unbelievable. He writes a letter to परमबीर सिंह. तो परमबीर सिंह कमिश्नर ने क्या किया आप बताइए? इधर परमबीर सिंह के बहुत शुभचिंतक बैठे हुए हैं किशोर तिवारी जैसे। कुछ नहीं, नहीं कुछ नहीं, मेरे को कोई रिप्लाई नहीं आया सर। उल्टा मेरे ऊपर LT मार्क ने, इन लोग ने एक प्लान बना के झूठा ट्रीटेन करके ये चीज बोला कि इसने 3 लाख रुपए लिया, जिसका कोई प्रूफ नहीं है, और LT मार्क में इसमें इन्वॉल्व होके तो मेरे इसका मतलब यही है, झूठा लोग ने एक प्लान बनाकर जो है इससे सीधा ये राइट नाउ अभी भी सर सॉरी फॉर गो ऑन कंप्लीट राइट नाउ इन्वेस्टिगेशन भी अभी LT मार्क में गए। मेरे को इस बात सर सॉरी फॉर राइट नाउ इन्वेस्टिगेशन अभी भी LT मार्क में। मेरे को इस बात का डाउट है कि इन लोग इस चीज़ को घुमा के वापस मेरे ऊपर डाल देंगे, क्योंकि ट्रस्टी शोएब खतीब इस चीज़ को झूठ बोल रहा है कि वहाँ पर ऑलरेडी ब्लैक मार्बल लगा हुआ था। ऐसा कोई की चीज़ लगी हुई नहीं थी, जैसा जनरल होता है वैसी जनरल कवर थी। इन लोग ने इसको पक्का बनाने का प्लान था और इस लोग ने मार्बल का किया, जिसको मैं डिनाई कर रहा था कि मैं एक बम ब्लास्ट के आरोपी को ऐसा नहीं कर सकते। किशोर तिवारी, आप कहते हैं आप शिवसेना के हैं, कई लोग कहते हैं आप सोनिया सेना थे, मगर अब क्या है मुझ किसी को पता ही नहीं है। बट द पॉइंट इज दिस, why did you allow a memorial for a terrorist? Please stop smiling about it. You have been exposed on Republic TV. Shweta is here, MR is here. Ishkaran, is this a laughing matter that they compromised with the MVA allies to this point? After all, was Nawab Malik not close to Rauf Memon? Is Nawab Malik not close to Rauf Memon? Arnab, the rot is so deep. Let us see how it all starts. You remember when Yakub was hanged? And the Naxal sort of a headline in a leading paper, they hanged Yakub, a language which is used for other countries. Who had hanged? A court by convicting, by upholding it, president by rejecting the mercy petition, the Indian state. This is the language of Naxals. That is how deep the support is, where what you call Lutyens media has a headline saying, they hanged Yakub. And what do you see when MVA comes to power? A person who wanted mercy for a convicted terrorist gets to be made a minister. And of course, if you believe somebody deserves mercy, you will glorify him. You will allow in your government for his tomb to become a mausoleum. I thought Delhi was a city of mausoleums, but unfortunately it is happening there also. No, I'm asking you. Don't stop there also. I am asking you. One last thing I want to say.
everybody who signed on that file, everybody who allowed that, even though somebody was complaining about it, they should be prosecuted to the full extent of law so that we stop glorifying terrorists in this country. Okay, Mr. Tiwari, I have a question for you. Your allies were close to Rauf Memon, relative of Tiger Memon. True or false? True or false? Rauf Memon is close to Nawab Malik. True or false? Rauf Memon is close to this other fellow. What's his name? Aslam Sheikh. True or false? Did the Uddhav government allow the tribute for a terrorist when Congress party's Aslam Sheikh, who had signed on the mercy petition for Yakub Memon, was made a minister in the Uddhav government? He can be seen in pictures with Rauf Memon. Rauf Memon is the person who put the threat, which means the person who put the threat and is using 1 minute. Let me allow No, you will not answer my question, so I'll repeat it. The person who threatened Jazil Naurange, who's on my program, the person who threatened Jazil Naurange is close to both Nawab Malik and Aslam Sheikh, who were ministers in the Uddhav government. True or false? Which means terrorists indirectly. Terror groups indirectly had clout in the MBA government. True or false? True or false? Let me clear my stand. Arnab, this is not fair. You first answer my question. No, Shweta, we must make him answer our question. And my question to you is Nawab Malik close to Rauf Memon? You are only asking the question. Is Nawab Malik close to Rauf Memon? Is Aslam Sheikh close to Rauf Memon? Is he a Yakub Memon sympathizer? Let me reply. Arnab, let me reply. Arnab, let me reply first. Arnab, nobody will speak now. Let me speak. I will speak within a minute. The Dawood Abraham or Tiger Menon, all are there from last 8 years of BJP. In fact, when मिनिस्टर बने थे क्या किशोर जी? मिनिस्टर बने थे क्या? in 2015, बिजली किसने दी? अप्रूवल किसने दिया? आपके कमिश्नर ने किसी से तो पूछा होगा कि भाई एक्शन लूं कि नहीं लूं? अरे आपके जब कंप्लेन दिया आपके कमिश्नर ने एक्शन क्यों नहीं लिया? आपने असलम शेख को मंत्री क्यों बनाया? आपने नवाब मलिक को जेल के अंदर से मंत्री पद से निकाला क्यों नहीं? आप इसके तो उत्तर देते नहीं कब्र बनाने की परमिशन दी। अरे ये सब किया धराया इनका ही है। अगर ये नवाब मलिक जी तो दाऊद अब्राहम और टाइगर मेनन को क्यों अरेस्ट नहीं किया अभी तक? क्यों देश में लाया नहीं? अर्नब बॉडी को इन्होंने दिया, कब्र बनाने की परमिशन दी, किया धराया बीजेपी का है। आप समझ लिए नियत किसकी खराब है? ये राजनीति से प्रेरित है। क्या राजनीति से प्रेरित है? क्या राजनीति से प्रेरित है? आप जो ये कह रहे हैं, मैंने एक मिनट मुफ्ती सियाई जी आप देख रहे हैं, अभी बात को घुमाने के लिए कहेंगे राजनीति से प्रेरित है। मैं आपको कहना चाहता हूं, एक मिनट मान्यवर, आपसे मैं कुछ कहना चाहता हूं, मेरी बात सुनिए मान्यवर। मैं आपसे कह रहा हूं राजनीति से प्रेरित ये नहीं है, राजनीति से प्रेरित ये बात है कि याकूब गैंग के करीब बहुत सारे पॉलिटिकल कनेक्शंस आपके एमवीए सरकार में थे। अरे किसकी सरकार थी ये बताओ? अरे आपकी सरकार तो थी, मैं कह चुका हूं। अरे आपके पास कोई भी सबूत हो? सबूत बैठे हुए खुद बोल रहे हैं, जजील नौरंगे बोल रहे हैं, आप सुन नहीं पा रहे क्या? सारे सबूत दो। सबूत आपके सामने है, आप तो सबूत गैंग के मेंबर हैं। कानूनी कार्रवाई जजील नौरंगे, was there a political arrangement? I am going to ask today. Jazil Naurange is responding right now. Jazil is on the debate. Rauf Memon also involved in Dawood Shoes case. If ये लोग Rauf Memon से जितने भी लोग मिलते हैं, इनको ये पता चलना चाहिए कि Rauf Memon are involved in Dawood Shoes case. उसके बावजूद भी लोग उसको जो है अपने साथ बिठाते हैं। They involved in Dawood Shoes case. हमारे पास Dawood Shoes company case. मिट्टू को पूछो। Already they involved. Yes. अभी क्या कर रहे हैं? Start here from start belonging they have connected with the underworld. वो कबर से क्या करोगे बताओ? एक आतंकी की कबर बीजेपी ने बनाई, अब क्या करोगे बताओ? क्या और ग्लोरिफिकेशन करोगे?
मैं बता रहा हूँ लाइटिंग सर मैंने 2020 के अंदर 2020 के अंदर वक्फ बोर्ड के अंदर भी कंप्लेंट किया था। नेवर वक्फ बोर्ड। अरे भाई आप क्या बोल रहे हो? अभी तक किशोर तिवारी वो बोल रहे हैं और दिखा भी रहे हैं। नहीं पहले किशोर तिवारी आप शांत हो जाइए। किशोर तिवारी जी इतना एक्साइटेड मत होइए, कुछ होने वाला नहीं है। आप एक्सपोज हो चुके हैं। 2020 के अंदर मैंने कंप्लेंट किया था वक्फ बोर्ड। 2020 में किसकी सरकार थी? किशोर तिवारी 2020 में मुफ्ती जियाई जी याद दिलाइए इनको, शायद असद अब्बास याद दिलाइए इनको 2020 में किसकी सरकार थी, उद्धव ठाकरे याद दिलाइए। तो आप पावर के लिए कल टेररिस्ट को ग्लोरीफाई करेंगे? सबूत दो। इतने डेस्परेट है पावर के लिए आप। क्या बात कर रहे हो? राजनीति के लिए आपने कब्र को मजार बनाया कि नहीं? 2020 में कब्र को मजार बनाया कि नहीं? आपने इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन दिया कि नहीं? आपने मार्केट की परमिशन दी कि नहीं? आप ये बताइए किशोर जी, आपको क्या लग रहा था याकूब मेमन पीर बाबा हैं? आपको क्या लगता है पूरा मुंबई भूल जाएगा अपने गुनहगार को? Eyewitness in the middle and Mufti Zia on the left. Butcher of Mumbai, and this is what you do. You glorify the butcher of Mumbai. And you come here and speak in front of the entire nation. कैसे आपको कौन माफ करने वाला है किशोर तिवारी जी? शर्म कीजिए, कुछ उम्र का लिहाज कीजिए, कुछ तो देखिए। भगवान को जाके मुंह दिखाना है आपको। आप एक ऐसे व्यक्ति को जिसने जो गुनाहगार है, 1400 लोग मुफ्ती इंजर्ड हैं, जिनके पैर नहीं है, हाथ नहीं है, एक अंग काम नहीं कर रहा है, वो उस व्यक्ति की वजह से। और आपने उसको आप मजार बना रहे हैं, आप उसको पीर का दर्जा दे रहे हैं। अरे श्वेता जी गलत बात। मुफ्ती जिया is on the debate right now. Can we have the complainant in the middle? गलत बात आप कर रहे हैं। मुफ्ती जिया, आप दाऊद की सरकार चला रहे थे। देखिए बहुत जिम्मेदारी के साथ मैं कहूंगा चंद्रशेखर आजाद and किशोर तिवारी on the right, Mufti Ziai and MR Venkatesh on the left. Ladies and gentlemen, I've said it. Now Mufti Ziai. अरे आपके प्राइम मिनिस्टर वहां जाकर आए, उन्होंने देखिए अर्नब ऐसा मसला है कि तिवारी जी इस बात को प्रोटेक्ट करने में लगे हुए हैं कि वो किसका प्रोटेक्ट कर रहे हैं। वो पहले अपने आप में सोच ले और जिम्मेदारी के साथ कहें कि वो किसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हालात ये हैं कि जो भी लश्कर के लोग हैं, आप लश्कर जिनको धमकियां देता है, ISIS जिनको धमकियां देता है, टेररिस्ट जिनको धमकियां देता है, जो ऐसे आतंकवाद संगठन जिनको धमकियां देता है, आपकी हुकूमत उनके लोगों की सिक्योरिटी हटा देती है और ये बोल के हटा देती है कि जाए आप मरने दीजिए, हम किसी को सपोर्ट करते हैं। तो आप आज दुनिया के सामने बताइए ना, चुनाव है तिवारी जी, आप बता दीजिए आप किसके सपोर्ट में खड़े हैं? आप MVA के सपोर्ट में हैं या टेररिस्ट के सपोर्ट में? MVA के सपोर्ट में है या टेररिस्ट ग्रुप को सपोर्ट कर रहे हैं? बताइए ना देश को। अरे देश का माहौल देश सुनना चाहता है आप किसके सपोर्ट में खड़े हैं। आज देश को बताइए आप किसके सपोर्ट में खड़े हैं? टेररिस्टों के सपोर्ट में खड़े हैं, आप आतंकवादियों के सपोर्ट में खड़े हैं, MVA के सपोर्ट में खड़े हैं। Chandrasekhar Jha on the right. Chandrasekhar Jha is responding right now on a fierce debate, and we have more details coming in on the Yakub gang story. Chandrasekhar Jha, and then after that MR Venkatesh. Yes, please, Chandrasekhar Jha. You need to tell me, was there political collusion or not? Chandrasekhar Jha, the fact is you've been caught red-handed. Now there is no point denying it. It is the time to confess. You can confess. Some people will forgive you. But don't deny. Don't deny. MR, can he deny anymore? MR, can he deny anymore? Can he deny? Can we allow him to get away with the denial tonight, MR? No, we should not allow him to get away. The most important thing is that sir, please listen. Sir, your links with the terrorists, your party people's links with the terrorists is well known. आप लोग टेररिस्ट के साथ हॉबनॉब करते हैं और टेररिस्ट के साथ उठते हैं, बैठते हैं, टेररिस्ट की आइडियोलॉजी बनाते हैं और ये सोच के बनाते हैं कि आपको पॉलिटिकल गेन हो। ये स्टॉप होनी चाहिए। क्या चीज की आइडियोलॉजी की बात कर रहे हैं? एक टेररिस्ट को आप ग्रेवयार्ड में रखते हैं। हम देश के उद्यान की बात करते हैं, रियासत को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। आपके ये CM CP जो थे ना, आपके हुकूमत के वक्त में अरे तो देश के उद्यान की बात आप उस तरीके से करते हैं कि आप उनको जो है वहाँ पे मुंबई में ग्रेव में याद करके रखें। कैसे करें बताइए ना। आज धमकियां खुलेआम दी जाती है और आपकी हुकूमत सबकी सिक्योरिटी हटा देती है। क्या बात है बताइए आप। और आपका वहाँ 2015 में क्यों नहीं करे थे कि उनका वहाँ बॉडी नहीं करे? आप आतंकवाद के खिलाफ नहीं बोलते। हम लोग आतंकवाद के खिलाफ बोलने वाले, टेररिस्टों के खिलाफ बात करने वाले लोगों को आप सरेआम खुलेआम धमकियां दिलवाते हैं। ये आप किसके इशारे पे काम करते थे? आप किसके इशारे पे काम करते थे ये बताइए देश को। ये देश सुनना चाहता है आपसे, देश जानना चाहता है आपसे कि आपके पीछे बैकअप देने वाले कौन थे, कवर फायर आपको कौन दिया करते थे? बताइए देश को। Because he's asking ये देश को बताइए ना। ये महाराष्ट्र के लोग आपसे जानना चाहते
चाहते हैं, सवाल करते हैं आपसे। हम महाराष्ट्र के लोग हैं, हम यहाँ के रहने हैं, हम यहाँ के वासी हैं। आपने एक टेररिस्ट की बॉडी को You see, viewers, this is an investigative report, and Syed, I said it day before yesterday. You know, they don't like Republic. मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये Republic को पसंद नहीं करते. But because I've exposed this today, I followed it up. This is an investigation. Syed, listen to me. How was the then state government of Uddhav not aware of D-gang demanding the plot of land in Mumbai's Kabristan? Jazil Naurange notified the police. Parambir was the police commissioner. He wrote in the letter that Rauf Memon is taking Tiger Memon's name to threaten me and my life. How did the state government and the police commissioner pretend not to know? It is on record. The letter is there with him and a copy is there with me as well. What is there to hide? The documents are here. Now someone needs to explain instead of trying to make this a political debate. Syed, how did they allow this beautification? Trustees are saying I'm being threatened. Are trustees saying I'm being threatened using the name of Tiger Memon? What was the state government doing? Blind, inept or incompetent? Firstly, I do not believe he should be called Tiger Memon. He is a Buzdil Memon and he is not Tiger Bhai. Usse bada wo kisi ka bhai nahi hai. He is a terrorist. First things first, Arnab. As an Indian I speak today, I blame the Bada Kabristan Waqf. How dare you? Is this what Islam teaches you, to give a land to a terrorist? Is this your Islam? What kind of a Muslim are you? Jazil has come out and notified about all this. The fact of the matter, MBA did not do anything. On your channel, I appeal to the Chief Minister of Maharashtra, Eknath Shinde, Deputy Chief Minister, remove those marbles from there. Remove those granites. We do not want to see a terrorist being glorified. He not only killed 257 people, but 1,400 people were injured. 12 places were blasted at the financial capital of India. An Indian does not want to see any of this. Syed, what about, one minute. What about that fellow Parambir, who was being told by a citizen of this country? What about that fellow Parambir, who was being told by a citizen of the country that I'm being threatened using the name of Tiger Memon? What did that fellow Parambir do? Why should there not be action against him? Now coming to Parambir, Arnab, you very well know of my stand there. You know about the vendetta he held against you. You know, there is a saying in Islam, Wato izzo mantosha, wato zillo mantosha. Almighty alone can give you respect or disrespect. Today we know who is holding respect. The question is not that. The question is serious. We know who is holding no respect. No, but did the MVA government act on Rauf's... Parambir's respect is zilch. No, but what was the state government doing? Kishore Tiwari is shouting here. How is it that the government refused to act? If a citizen goes and says that I'm being threatened by a member of the D gang, and I'm being told, using a D gang member's name, that I will be bumped off if I don't beautify Yakub Memon's grave, what does the state government do, Kishore Tiwari? Let this government take What was the... No, I'm asking you, what was your government doing? आंसर श्वेता, आप क्या कर रहे थे भाई? आप बताइए ना मुफ्ती ज़ियाई को. किसके इशारे पे काम करते थे वो बताइए. किसके इशारे पे आप काम कर रहे थे बताइए. सरकार चलाने के लिए काफी है ना, ये बता नहीं पा रहे हैं कि ये किसके इशारे पर बताइए. सरकार चला रहे थे किस-किसके इशारे पर से. कौन बैकअप दे रहा था इनको, कौन कवर फाइल दे रहा था इनको, जरा पूछिए इनसे. बताने से काशी रही है. A high level committee investigation should be done. अब तो हम देखेंगे ही और करेंगे, जो जरूरी है वो अवश्य करेंगे. लाइट का कनेक्शन अभी से कर दिया है. कमेटी बनेगी और मैं उम्मीद करता हूं कि कमेटी बननी चाहिए. कमेटी तमाम चीजों का इन्वेस्टिगेशन करेगी और जिन लोगों ने झूठ बताया कार्रवाई भी होगी. आपने कैसे रखा? I will see the डीसीएम देवेंद्र फडणवीस इन पर कार्रवाई जरूर करवाएंगे. उसको वहां से मैं आज एक लेटर ड्राफ्ट कर रहा हूं डीसीएम के लिए और मैं आज एक लेटर ड्राफ्ट करके डीसीएम साहब को भेजूंगा कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई फौरी की जाए. इन मुंबई और इन महाराष्ट्र, इनफैक्ट इन इंडिया. और किशोर तिवारी जी इंक्वायरी बैठ चुकी है. Ladies and gentlemen, this is a continuing Republic investigation. We are bringing more details. For the last 2 or 3 days, there's been an uproar about this, and I think this is one of the many dark deeds, many dark deeds of the Uddhav government, of the MVA government. On the other side tonight, big face-off over the security breach of one of India's most prominent politicians, Assam Chief Minister. He has Z+ category security. Then how did Himanta Biswa Sarma have the kind of security breach which he went through, and how dangerous that could have got in Hyderabad today, and why this is a political hot potato right now? In a few minutes, when I'm back, more on that.
आग को फैलने से रोकना मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। अब फायरवॉल टेक्नोलॉजी के साथ सेंचुरी प्लाइड क्लब प्राइम आग से बचाए। 11,000 placements last year. At Amity, we are committed to nurturing passionate, hardworking and proactive professionals. आग को फैलने से रोकना मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। अब फायरवॉल टेक्नोलॉजी के साथ सेंचुरी प्लाइड क्लब प्राइम आग से बचाए। Enroll in any of REVA's wide range of courses designed to take on an evolving education and an expanding future.